Good afternoon, sir. All of you, very good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Very good afternoon. Good afternoon. This is Good afternoon, sir. good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Is the screen visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Sir, sir. it's visible. Okay. Then Sir. this topic is processing of data, coding, and introduction to Minitab. Today, we are going to discuss processing of data, coding, and introduction to Minitab. Starting with data processing in research. Data processing in research. As you all are student of research, you are research students, so you must know how you will process your data. Data processing in research is the collection. सर स्लाइड नहीं चल रही है सर स्लाइड नहीं हेलो सर स्लाइड चेंज नहीं हो रही है अभी हमने चेंज किया ही नहीं है स्लाइड ये दिख रहा है डेटा प्रोसेसिंग इन रिसर्च लिखा हुआ दिख रहा है हेलो सर प्रोसेसिंग ऑफ डेटा कोडिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ मिनीटैब दिख रहा है सर इस और नहीं है अभी कुछ अच्छा हाँ सर अब आ गया है सर अब दिख रहा है Yes, sir. अब दिख रहा है डेटा प्रोसेसिंग इन रिसर्च Yes, sir. Yes. ओके सर पूरी स्लाइड नहीं दिख रही है कहाँ तक दिख रही है पूरी स्लाइड नहीं दिख रही मतलब कहाँ तक दिख रही है सर सिर्फ लास्ट वाली लाइन नहीं दिख रही सर बेटर रिजल्ट्स जो नीचे लिखा हुआ है वो हाफ दिख रहा है सर बेटर रिजल्ट्स के बाद कुछ लिखा ही हुआ नहीं है तो दिखेगा नहीं कहाँ? नहीं सर एक्चुअली बेटर रिजल्ट्स मैं एज्यूम करके मतलब उसे पढ़ रही हूँ बट पूरा क्लियरली नहीं दिख रहा है सर जो दिख रहा है वो जरा पढ़ डालिए जी जी सर और बाकी सर दिख रहा है ठीक है अच्छी बात है थैंक यू सर सुनती रहिए सब दिखेगा शांति से और बाद बाकी तो मैं शेयर कर ही दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे पीडीएफ के फॉर्म में तो ध्यान से सुनते रहिए हाँ जब मैं सॉफ्टवेयर रन कराऊंगा तो जरूर दिखना चाहिए तब बताइएगा अगर ना दिखे तो डेटा प्रोसेसिंग इन रिसर्च व्हाट इज डेटा प्रोसेसिंग इन रिसर्च इट इज द कलेक्शन and translation of a data set into valuable and usable information. Through data processing, a researcher, a data engineer, or data scientist takes
raw data and converts it into a more readable format Sir, such as a graph, report, or chart, either manually or through any automated tool, maybe Microsoft Excel or Minitab, which we are going to study today. The researcher will then use this information to gain insights, solve problems, make improvements, and ultimately generate better results. Now, what are the stages of data processing? What are the different phases of data processing? When we process a data, we follow a cycle which includes several steps. Though each stage has a specific order, the entire process of data processing repeats cyclically, means it follows a cycle. Now the first step of data processing is collection. First step is collection. Collection of what? Collection of data. सर स्लाइड चेंज नहीं हुई है. सॉरी, क्या बोल रहे हैं? Sir, please change the slide. ओके, दिख रहा है? यस सर. sir. बहुत छोटा सा है सर. बहुत छोटा फॉन्ट है सर. हाँ, छोटा फॉन्ट है. कोई बात नहीं सर, लोग जूम करके पढ़ लेंगे. छोटा फॉन्ट है, जब हम शेयर करेंगे तो आप देख ही लेंगे उसको. जी सर. अभी मैं बोल रहा हूँ, जो लोग नोट कर रहे हो वो ध्यान से सुने और नोट करते रहें अगर फॉन्ट छोटा दिख रहा है तो. डेटा कलेक्शन is the process of extracting data from some sources. कोई ना कोई एक ऐसा सोर्स होगा जहां से आप अपने रिसर्च के लिए डेटा कलेक्ट कर रहे होंगे. तो डेटा कलेक्शन क्या है? प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग डेटा फ्रॉम अवेलेबल सोर्सेस such as data warehouses and data lakes. Raw data can come in several forms, from user behavior to monetary figures to profit statements to web cookies. Once again, I am repeating, raw data can come in several forms, from user behavior to monetary figures
to profit statements to web cookies. Now the type of raw data that we collect will have the type of raw data that we collect will have a significant impact on the output which we will produce later, when the stage comes to produce the output. Researchers must look to accurate, trustworthy, and comprehensive sources for valid and usable findings. This is very important when we are in the process of extracting data, when we are in the process of collecting data. It is very important for a researcher to look that the source from which a researcher is collecting data, a researcher is collecting raw data, that source must be accurate, trustworthy, and comprehensive source to get valid and usable findings. So the first stage is data collection, process of extracting data from available sources. The raw data comes in several forms, and the type of raw data that we collect will have significant impact on the output, which is very important for the research, which is the final of the research, the output. The researchers should check that the source should be trustworthy to get valid and usable findings. Now the second stage of data processing is preparation. What is preparation? Preparation of data. डेटा को प्रिपेयर करना है, और डेटा को इस तरह से प्रिपेयर करना है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है रिसर्च का, उस ऑब्जेक्टिव पे हम उस डेटा को अप्लाई कर सकें. हम डेटा जो कलेक्ट करते हैं वो रॉ डेटा होता है, उसको हम जैसे कलेक्ट किए वैसे ही इस्तेमाल नहीं कर सकते. उसको हमें पहले प्रिपेयर करना पड़ता है, उस फॉर्मेट में लाना पड़ता है जिस फॉर्मेट में हम उसको अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकें. सो सेकेंड स्टेज इज प्रिपरेशन. थ्रू डेटा प्रिपरेशन we will polish, organize, filter, and examine raw data for errors. This data preparation stage is meant to eliminate incorrect, redundant, or incomplete data. Do you know redundant? What is redundant? What do you mean by redundant? Anyone? Redundant मतलब क्या होता है? मेरे दांतों को. Redundant मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है? Obsolete. सर जो काम करना हो.
obsolete, sir. सर जो नेसेसरी ना हो, Not useful for नेसेसरी. sir, no longer needed. नहीं, Sir, which is not redundant, necessary for our work. sorry, It is not necessary. no. Redundant means duplicacy of data, and duplicacy of data means repetition of a data. एक ही डेटा जब बार बार रिपीट हो रहा होता है तो उसको बोलते हैं रिडंडेंसी. कई बार हम लोग इंटरनेट पे कुछ डेटा इंसर्ट कर रहे होते हैं और अगर वो डेटा ऑलरेडी अवेलेबल होता है तो आपने देखा होगा मैसेज आ जाता है, दिस रिकॉर्ड इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग या दिस डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट. तो वो क्या है? वो रिडंडेंसी data, redundant data or incomplete data and convert it into a suitable form for further processing and analysis. The goal of the preparation stage is to achieve the highest quality data possible. The goal of the preparation stage, हम सेकेंड स्टेज में हैं और सेकेंड स्टेज प्रिपरेशन, डेटा प्रिपरेशन. पहला स्टेज क्या है? Collection of the डेटा. दूसरा स्टेज है डेटा प्रिपरेशन का. तो डेटा प्रिपरेशन मतलब हुआ डेटा को पॉलिश करना, ऑर्गेनाइज करना, फिल्टर करना और रॉ डेटा को एग्जामिन करना कि कहीं कोई डेटा में एरर तो नहीं है. और ये जो डेटा का प्रिपरेशन स्टेज है, इट एलिमिनेट्स इनकरेक्ट, रिडंडेंट और इनकम्प्लीट डेटा और उसको कन्वर्ट कर देता है एक सुटेबल फॉर्म में फर्दर प्रोसेसिंग के लिए और एनालिसिस के लिए. The goal of this data preparation, this second step is to achieve the highest quality data possible. Highest quality का डेटा हमारे पास अवेलेबल हो, उसको हम अप्लाई करें अपने रिसर्च पे. जितनी डेटा की क्वालिटी हाई होगी, हमारा रिजल्ट उतना अच्छा हम अचीव करेंगे. अपने रिसर्च का जो भी हमारा टॉपिक है उस पे हम काम कर रहे हैं, तो अगर डेटा सही नहीं होगा तो हम रिजल्ट सही नहीं ऑब्टेन कर पाएंगे. हमारा रिजल्ट हाईएस्ट क्वालिटी का नहीं होगा. तो हाईएस्ट क्वालिटी का रिजल्ट ऑब्टेन करने के लिए, अचीव करने के लिए डेटा के हाईएस्ट क्वालिटी का होना बहुत जरूरी है. इसलिए डेटा प्रिपरेशन पे बहुत ध्यान देना है. तीसरा स्टेप इनपुट का है. The input stage is the first stage where raw data begins to resemble usable information. Once the data is clean, data हमने clean कर लिया, we will enter it into a corresponding destination such as a data warehouse or customer relationship management software. In short, we say CRM software, and translate it into a compatible language for these systems. We can enter this data using numerous input sources, including keyboards, scanners और digitizers. जब डेटा हमने प्रिपेयर कर लिया तो तीसरा स्टेप है
डेटा को इनपुट कराना है हमारे सिस्टम में, हम जो रिसर्च, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग हमने एक सिस्टम तैयार किया होगा। उस सिस्टम के अंदर, एक सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर हमें डेटा इनपुट करना है। नंबर 4, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। नेक्स्ट, we will begin to process the data stored in our computer during the input stage, data input stage. We can conduct data processing using machine learning and artificial intelligence algorithms to generate the desired input, but the processing will vary based on our data sources and intended, I am saying intended, and intended output use. We can use the data from the processing stage in a variety of ways, from such as, for example, creating medical diagnosis to determine customer needs, to drawing connections between advertising patterns. Now, step 5 is output. Through this stage, data becomes usable and can be interpreted by non-data scientists. This translated data is readable and often presented in images, graphs, text, audio and videos. हमारा जो आउटपुट है वो इमेज के फॉर्म में भी हो सकता है, ग्राफ के फॉर्म में भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है या वीडियो भी हो सकता है। Once interpreted, company members or an individual can self-serve the data for their analytical projects. The last stage is storage. Last step of data processing is storage. Storage of the result. After processing the data successfully, all remaining information should be stored for later use when a researcher or any company properly store their data पल्लवी जी प्लीज अपना माइक ऑफ कर ले। when a researcher or any company properly store their data, they remain compliant with data protection legislation. They remain compliant with data protection legislation and promote a faster, easier
accessing information when they need to. Once again, I am repeating the last step. First step is data collection. Second step, data. The collected data into the system. Fourth step is processing of data. The data which we have entered into our system will be processed depending upon the hypothesis. Fifth step is output. Data becomes usable and can be interpreted by non-data scientists. The translated data is readable and often presented in images, graphs, text, or after interpreting, the researcher will self-service the data for their analytical project, and the final step is storage step. After processing the data successfully, all remaining information should be stored for later use. It should be properly stored, and the researcher should remain compliant with data protection. Now the next topic is coding of data. Is the slide visible to all of you? दिख रहा है slide? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Coding of data. Coding means programming. अब यहां हम लोग प्रोग्रामिंग की बात करेंगे. हो सकता है आपको अपने डेटा को एनालाइज करने के लिए, टू प्रोसेस योर डेटा, टू एनालाइज योर डेटा, you may need to write some coding, little coding, some coding will be required to process data, to analyze your data. So let us understand what is coding or what is programming. Coding of data refers to the process of transforming collected information or observations to a set of meaningful and cohesive categories. Coding of data is a process of summarizing and representing data in order to provide a systematic account of the recorded or observed phenomena. Data refer to a wide range of empirical objects such as historical documents, newspaper articles, TV programming, field notes, interview or focus group transcripts, pictures,
face-to-face conversation between two people or some people, social media messages, for example, tweets or YouTube comments or Facebook comments, etc. Now, codes are concepts that link our data with the theory. They can either be predefined by the researcher or emerge inductively from the coding process. By coding data, researchers classify and attach conceptual labels to empirical objects under study in order to organize and interpret the output. In almost every step of the data science process, programming or coding is used to achieve different goals. As the field intensifies and becomes more complex, data scientists or researchers like you people will rely more and more heavily on coding to ensure that they can successfully solve more complex problems. In short, we can say that coding is a list of step-by-step instructions, or we can say coding or programming is a set of instructions that get computers to do what we want them to do. Coding makes it possible for us to create computer software, games, apps. There are so many apps today available in Google Store. All these apps are developed through coding, through programming, and websites are also there. Coders or programmers are people who write the programs behind everything we see and do on a computer. Once again, I am repeating, a coder or a programmer is one who writes the programs behind everything we see and do on a computer.
Now, processing of data, editing, coding, and classification, as we have studied that after data collection, data researchers must decide the following points. Point number 1, whether the tabulation of data will be performed by hand or by computer. Number 1, whether tabulation of data will be performed by hand or by computer. Number 2, how information can be converted into a form that will allow it to be processed efficiently. And number 3, what statistical tools or methods will be स्लाइड चेंज नहीं हो employed. रही Hello, सर, स्लाइड चेंज नहीं हो रही है। अब हो गई सर। अब दिख रही है? यस सर। So after collecting data, it must be reduced to some form suitable for analysis so that conclusions or findings can data will be performed by hand or by computer. Number 2, how information can be converted into a form that will allow it to be processed efficiently. And third is, what statistical tools or methods will be employed, will be used. Nowadays, computers have become very important tool for the tabulation and analysis of data. Even in simple statistical procedures, computer tabulation is encouraged for easy and flexible handling of data. Micro and laptop computers can produce tables of any dimension and perform statistical operations much more easily and usually with far less error than is possible manually. Now, if the data is large and the processing undertaken by computer, the following issues must be considered. Number 1, data preparation, which includes editing of data, coding of data, and data entry. Number 2, exploring, displaying, and examining data, which involves breaking down, examining, and rearranging data so as to search for meaningful description, patterns, and relationships. Editing,
It is the first step in analysis. Editing detects errors and omissions, corrects them whatever possible. Editor's responsibility is सर to स्लाइड चेंज नहीं हो रही। स्लाइड मैंने अभी चेंज नहीं किया है। अच्छा सर, ठीक है। हाँ, editor's responsibility is to guarantee that data should be accurate, consistent with the intent of the questionnaire, uniformly entered, complete, and arranged to simplify coding and tabulation. The editing of data अब चेंज कर दिया मैंने स्लाइड। एडिटिंग ऑफ डेटा कैन बी डन इन 2 ways. Number 1, field editing, and number 2, in-house, which is also known as central editing. Field editing is preliminary editing of data by a field supervisor on the same data as the interview. Its purpose is to identify technical omissions, check legibility, and clarify responses that are logically and conceptually inconsistent. When gaps are present from interviews, a callback should be made rather than guessing what the respondent would probably said. The supervisor is to re-interview a few respondents at least on some pre-selected questions as a validity check. In center or in-housing editing, all the questionnaires undergo through editing. It is a rigorous job which is performed by central office staff. Second step is coding, which we have discussed. Third is classification. Most research studies result in a large volume of raw data which should be reduced into homogeneous groups if we are to get meaningful relationships. This fact necessitates classification of data, which happens to be the process of arranging data in groups or classes on the basis of some common characteristics. Data having a common characteristic are placed in one class, and in this way the entire data get divided into a number of groups or classes. Classification can be one of the following 2 types. Number 1,
depending upon the nature of the phenomena involved. Number one is classification according to attributes. Data are classified on the basis of common characteristics, which can either be descriptive, such as literacy, sex, honesty, etc., or numerical data. The attributes, the characteristics can be descriptive or numerical. Numerical data such as weight, height, income, balance, mobile number, etc. Descriptive characteristics refer to qualitative phenomena which cannot be measured quantitatively. Only their presence or absence in an individual item can be noticed. Data obtained this way on the basis of certain attributes are known as statistics of attributes, and their classification is said to be classification according to attributes. Such classification can be simple classification or manifold classification. In simple classification, we consider only one attribute and divide the universe into two classes. One class consisting of items possessing the given attribute, and the other class consisting of items which do not possess the given attribute. But in manifold classification, we consider two or more attributes simultaneously and divide that data into a number of classes. Whenever data are classified according to attributes, the researcher must see that the attributes are defined in such a manner that there is least possibility of any doubt or ambiguity concerning the said attributes. Now the second one is classification according to class intervals, which is unlike descriptive characteristics. The numerical characteristics refer to quantitative phenomena which can be measured through some statistical units. Data relating to income, production, age, weight, etc. come under this category. And such data are known as statistics of variables and are classified on the basis of class intervals. Now, I am going to give you some examples of coding using a language Python. कोडिंग या प्रोग्रामिंग करना है डेटा एनालिसिस के लिए, तो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हम जरूर यूज करते हैं कोडिंग या प्रोग्रामिंग करने के लिए. किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करेंगे. बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे सी है, C++ है, जावा है, और अभी इन दिनों पूरे दुनिया में पाइथन एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है which has become a hot cake these days. More and more work
more and more research works are going on these days with the use of Python programming language for data analysis and interactive computing and data visualization. Python inevitably draw comparison with other open source and commercial programming language and tools in wide use such as R, MATLAB, SAS, Stata and others. इनका भी नाम सुना होगा आपने, R है, MATLAB है, ये भी आजकल डेटा एनालिसिस में बहुत इनका यूज किया जा रहा है, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का. पाइथन इन सबसे ज्यादा कन्वीनियंटली हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं और इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, as it is also an open source and commercial programming language. ओपन सोर्स वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं जिनके कोडिंग में हम मॉडिफिकेशन करके अपने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं. Python's improved support for libraries such as Pandas and scikit-learn has made it a very popular choice for data analysis tasks. Python में कुछ लाइब्रेरीज हैं. लाइब्रेरीज मतलब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर उसकी लाइब्रेरी होती है. लाइब्रेरी मतलब उस प्रोग्रामिंग के सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ बने बनाए सॉफ्टवेयर हैं, उन सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ बने बनाए फंक्शंस हैं जिनको हम ऑटोमेटिकली यूज कर लेंगे. डायरेक्ट हम जब उनका यूज करते हैं तो हमें ज़्यादा कोडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत कम कोडिंग में ही हमारा काम कंप्लीट हो जाता है, हमारा एप्लीकेशन तैयार हो जाता है. तो पाइथन में दो ऐसी लाइब्रेरी हैं, एक पांडास है और दूसरा scikit-learn है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, डेटा एनालिसिस के काम में जरूर यूज किए जाते हैं और इसीलिए ये पाइथन को बहुत पॉपुलर बनाते हैं. They combined with Python's overall strength for general purpose software engineering. It is an excellent option as a primary language for building data applications. Python के कुछ important libraries हैं which are very essential for data analysis, जिसमें number 1 is NumPy, short for numerical Python, and it has long been a cornerstone of numerical computing in Python. It provides data structure, algorithms, and library glue needed for most scientific applications involving numerical data in Python. Second one is Pandas, जिसका मैंने अभी reference दिया. Pandas provides high-level data structures and functions designed to make working with structured or tabular data fast, easy, and expressive. The primary objects in Pandas that will be used in data frame, a tabular column-oriented data structure with both row and column labels. Third one is Matplotlib. Matplotlib is another important library of Python for producing plots and other two-dimensional data visualizations. It was originally created by John D. Hunter
and it is designed for creating plots suitable for publication. Scikit-learn has become the premier general purpose machine learning toolkit for Python programmers. अब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है, उसका सॉफ्टवेयर होता है, जिस पे हम उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे कोडिंग लिखते हैं या प्रोग्रामिंग लिखते हैं. ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे ही बता रहा हूं. अब अगर हम पाइथन पे कोडिंग कर रहे हैं, पाइथन पे प्रोग्रामिंग करना चाह रहे हैं, तो एक ऑनलाइन क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जुपिटर. बहुत इंपॉर्टेंट है, जुपिटर लैब. आप गूगल पे टाइप करिए जुपिटर लैब, तो अपने आप ये साइट आपको मिलेगी. इस साइट पे जब आप क्लिक करेंगे तो jupyter.org ये साइट है. इस पे इस तरह से एक विंडो खुल के आएगा. अब इस विंडो पे देखिए, यहाँ मेन्यूज में फाइल है, एडिट है, व्यू है, रन है, कर्नल, सेटिंग्स, हेल्प, ये इसके मेन्यूज हैं. हम फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक करेंगे, जो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दिखा रहा हूं. ये फाइल पे गए. गूगल कोलैब पे भी होता है ना? हाँ, गूगल कोलैब से भी हो जाएगा. गूगल कोलैब का भी यूज कर सकते हैं और जुपिटर का भी यूज कर सकते हैं. गूगल कोलैबोरेटरी, आपके पास गूगल पे मेल है, गूगल की मेल आईडी है, तो आप गूगल कोलैब पे भी काम कर सकते हैं. जुपिटर, इसमें फाइल पे जब आप न्यू नोटबुक पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह की स्क्रीन खुल के आएगी. और ये जो ये यहाँ पे आपको कमांड प्रॉम्प्ट दिख रहा है, यही ये कमांड प्रॉम्प्ट है. यहीं पे कोडिंग लिखते हैं, पाइथन की कोडिंग लिखी जाती है. वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाने जा रहा हूं कि पाइथन की कोडिंग कैसे लिखेंगे. ये देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने बनाया है जिसमें ये मैटप्लॉटलिब, अभी हम बात कर रहे थे पाइथन की कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं, तो यहाँ पे इस छोटे से प्रोग्राम में एक मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का यूज कर रहे हैं. फ्रॉम मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी इंपोर्ट पाईप्लॉट. ग्राफ डिजाइन करने के लिए, पाइथन में ग्राफ प्लॉट करने के लिए इस पाईप्लॉट का यूज करते हैं. तो ये पाईप्लॉट किसके अंदर है? मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के अंदर है. इसलिए सबसे पहले लिखा गया फ्रॉम मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट. क्या इंपोर्ट कर रहे हैं मैटप्लॉटलिब में से? पाईप्लॉट फंक्शन इंपोर्ट कर रहे हैं एज पीएलटी. पीएलटी इज अ वेरिएबल. अब यहाँ पे कुछ कोडिंग लिखी हुई है नीचे, और x इक्वल्स एक एरे ले लिए जिसमें 5 to 7 3 नंबर हैं. y एक्सिस के लिए 2, 16, 4 है. अब पीएलटी ये जो पाई प्लॉट का वेरिएबल है पीएलटी, इस पीएलटी वेरिएबल का यूज करके पीएलटी डॉट प्लॉट x, y, ये x और y एरे के अंदर जो पॉइंट्स हैं इनकी हम प्लॉटिंग कर रहे हैं, ग्राफ डिजाइन कर रहे हैं. पीएलटी डॉट टाइटल, अपने ग्राफ का टाइटल दे दिया इन्फो. पीएलटी डॉट वाई लेबल का टाइटल है वाई एक्सेस. पीएलटी डॉट एक्स लेबल, एक्स एक्सेस का नाम एक्स एक्सेस है. पीएलटी डॉट शो, अब ग्राफ को शो कराएंगे. ग्राफ कैसा दिखेगा ये नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रहा हूं आपको. दिस इज द नेक्स्ट स्लाइड. ये देखिए, ये ग्राफ बन गया. ये कोडिंग हमने एग्जीक्यूट की. ये कोडिंग टाइप करने के बाद क्या करते हैं,
ये कोडिंग टाइप करने के बाद ये देखिए, ये जो बटन है इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी कोडिंग रन हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। या ऊपर ये रन मेन्यू है, इस पे भी क्लिक करेंगे तो ये कोडिंग रन हो जाएगी। तो पहले तो कोडिंग टाइप करते हैं। कोडिंग टाइप करेंगे किस पे? जुपिटर के एडिटर पे टाइप करेंगे। जुपिटर कहाँ अवेलेबल है? जुपिटर आपको अलग से इंस्टॉल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही कन्वीनियंटली क्लाउड पे अवेलेबल है। गूगल पे जाके jupyter.org हम लोग ओपन करेंगे प्लेटफॉर्म। यहाँ पे पाइथन की कोडिंग की जा सकती है। फाइल पे गए, न्यू नोटबुक पे क्लिक किए, ये ओपन हो गया नोटबुक। इस पे ये कोडिंग लिखे, कोडिंग लिखने के बाद रन पे क्लिक करेंगे या इस ट्रायंगुलर बटन पे क्लिक करेंगे तो अगर कोई एरर नहीं होगा तो हमारे सामने ये ग्राफ बन के चला आएगा। एक और कोडिंग का एग्जांपल दिखा रहा हूं। एक और छोटी सी कोडिंग है इस स्लाइड में। मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट पाईप्लॉट एसपीएलटी जैसे पिछली कोडिंग में किए थे। यहाँ पे एक और पैकेज इंपोर्ट कर रहे हैं, स्टाइल। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पिछला जो ग्राफ प्लॉट किए थे उसको थोड़ा स्टाइल देने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्टाइल के लिए इसी मैटप्लॉटलिब के अंदर पैकेज है स्टाइल पैकेज, इसको भी इंपोर्ट कर लिए। स्टाइल डॉट यूज जीजी प्लॉट, इस प्लॉट का नाम है जीजी प्लॉट। एक्स एक्सिस पे 3 वैल्यू, वाई एक्सिस पे 3 वैल्यू, x2 पे 3 वैल्यू, y2 पे 3 वैल्यू। अब plt डॉट प्लॉट x, y प्लॉट कर रहे हैं। g एट्रीब्यूट है, लेबल इक्वल्स लाइन 1 और लाइन विड्थ। इस बार जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे उसमें अभी जो ग्राफ हमने प्लॉट किया था इस लाइन से इस लाइन, ये लाइन थोड़ी ज्यादा वाइडर होगी। टाइटल है एपिक इन्फो, वाई लेबल वाई एक्सेस, एक्स लेबल एक्स एक्सेस। plt डॉट लीजेंड फंक्शन का यूज कर रहे हैं, plt डॉट ग्रिड फंक्शन का यूज कर रहे हैं। ग्रिड बन के आएगा हमारे ग्राफ में। plt डॉट शो, ये देखिए ये आ गया एपिक इंफॉर्मेशन। ये लाइन वाइडर है और ये देखिए ये जो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल लाइंस बने हुए हैं ये क्या है? ग्रिड है। क्योंकि हमने अपनी कोडिंग में यहाँ हम ग्रिड का यूज कर रहे हैं स्टाइल देने के लिए। ग्रिड का यूज किया जा रहा है। plt डॉट ग्रिड ट्रू कलर इक्वल्स k। ये एक्स एक्सिस जैसा हमने टाइटल दिया है, ये वाई एक्सिस की टाइटल हो गई। पूरे ग्राफ की टाइटल है एपिक इन्फो। ये एक और छोटी सी कोडिंग है पाइथन की जिसका यूज करके इस बार बार ग्राफ बना रहे हैं। डिस्टेंस ले लिए किलोमीटर में वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे डेज का नाम है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस और डेज के वर्सेस हम एक बार ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं पाइथन की कोडिंग यूज करके। टाइटल है ग्राफ का इंफॉर्मेशन, plt डॉट बार, ये वैल्यूज हैं। इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग बार ग्राफ प्लॉट करेंगे।
ये इस तरह का ग्राफ बन के हमारे सामने आ जाएगा, बार ग्राफ, डेज और डिस्टेंस के बीच में डेटा हम जो भी ले सकते हैं। और यहाँ पे दो कार को कंपेयर कर रहे हैं, BMW कार का परफॉर्मेंस और दूसरा ऑडी कार का परफॉर्मेंस। तो दो कार के परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए ये एक छोटी सी पाइथन की कोडिंग का यूज करके हम लोगों ने बार ग्राफ, हम लोग इस तरह से बार ग्राफ जनरेट कर सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं मिनी टैब, एक स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है मिनी टैब। ये मिनी टैब कहाँ पे अवेलेबल है, कैसे अवेलेबल है और मिनी टैब है क्या, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। What is Minitab? A Minitab is a software which is powerful statistical software which everyone can use. Minitab predicts, visualizes, analyzes, and harness the power of our data to solve toughest business challenges or research challenges from anywhere on the cloud. अब इस पे काम कैसे करेंगे, ये देखिए, ये मिनी टैब, जब आप गूगल पे मिनी टैब टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे तो एक लिंक आएगा minitab.com का, आप डायरेक्ट इस पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो खुल के आएगी। अब यहाँ पे स्टार्ट योर फ्री ट्रायल है, 30 डेज के लिए मिनी टैब फ्री ट्रायल देता है, इसका हम लोग यूज कर सकते हैं फ्री ट्रायल का। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मिनी टैब पे काम करने के लिए बता दें कि मिनी टैब का यूज आप अपने पर्सनल ईमेल आईडी से नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपके पास आपकी एकेडमिक ईमेल आईडी होनी चाहिए। आप अपने एकेडमिक ईमेल आईडी से ही मिनी टैब डाउनलोड कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप पे। मैंने अपने लैपटॉप पे मिनी टैब इंस्टॉल किया हुआ है थ्रू माय एकेडमिक ईमेल आईडी। तो इस स्टार्ट योर फ्री ट्रायल पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये विंडो खुल के आएगा, स्टार्ट योर फ्री 30 डे ट्रायल। और यहाँ पे इसके नीचे ये देखिए, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन मांग रहा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एक पूरा फॉर्म होगा। इस फॉर्म को जब आप भरेंगे तो लास्ट में सबमिट करने के बाद आप मिनी टैब के सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हैं। जब आप फॉर्म भर देंगे तो ये देखिए, ये इस तरह से लिख के आ रहा है, थैंक यू एंड एंजॉय योर फ्री ट्रायल मिनी टैब, यू आर ऑलमोस्ट देयर। 15 मिनट का टाइम लगेगा। 15 मिनट के अंदर आपके मेल बॉक्स पे एक एक्टिवेशन लिंक आएगा, जैसे मेरे मेल पे यहाँ आया हुआ है, सपोर्ट विथ अ लिंक टू एक्टिवेट योर मिनी टैब अकाउंट एंड स्टार्ट योर ट्रायल। तो आप अपने मेल अकाउंट पे जाएंगे और वहां एक्टिवेशन की मेल आई होगी मिनी टैब की तरफ से। आप उस एक्टिवेशन के लिंक को क्लिक करेंगे तो आपका मिनी टैब अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। और अब आप ये, जैसा कि नेक्स्ट स्लाइड में मेरे दिख रहा है, यू हैव सक्सेसफुली एक्टिवेटेड योर अकाउंट, इस तरह से विंडो आएगा। यहाँ पे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये एक एग्रीमेंट है, लीगल एग्रीमेंट, इस पे लास्ट में नीचे जाके चेक कर देंगे
that you are accepting all the terms and conditions of Minitab to use this software. When you will check, then you will get into the next step. This is the next step. Minitab statistical software is now available on the cloud, and now you will get two options. One is download the desktop app, and second one is open the web app. आप मिनी टैब के सॉफ्टवेयर को अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पे डाउनलोड भी कर सकते हैं, इंस्टॉल भी कर सकते हैं, या दूसरा रास्ता है कि आप इस लिंक पे ओपन वेब ऐप पे जब क्लिक करेंगे तो आपको लैपटॉप पे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट क्लाउड के थ्रू मिनी टैब को यूज कर सकते हैं। ये देखिए, ये मिनी टैब है। मिनी टैब पे क्लिक किए तो इस तरह से ये विंडो ओपन होके आ रहा है। ये मिनी टैब का सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, फाइल है, एडिट है, डेटा है, कैलकुलेशन है, ये स्टैट मतलब स्टैटिस्टिक्स है, ग्राफ है, व्यू है, हेल्प है, असिस्टेंट है, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स मॉड्यूल है। कुछ इंपॉर्टेंट काम मैं करके दिखा रहा हूँ। ये नीचे देखिए, ये जो स्प्रेडशीट है एक्सेल की तरह, यहाँ पे आपका डेटा होना चाहिए। यहाँ पे आपका डेटा होगा, या एक्सेल पे भी है तो आप उसको इंपोर्ट करके यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका डेटा होना चाहिए जिस डेटा की आप एनालिसिस करने जा रहे हैं। और जब डेटा आपका यहाँ पे अवेलेबल है तो यहाँ पे बहुत सारे मेन्यूज हैं, इनका यूज करके आप मिनी टैब पे काम कर सकते हैं। ये देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में मेरा कुछ काम है। जैसे ये मेरा एक डेटा सेट है, किसी चीज का, किसी आइटम का डेटा है, डिफेक्ट नेम, एंड सेकंड वन इज डिफेक्ट क्वांटिटी। डिफेक्ट नेम इज XYZ ABC EFG। ये तीन तरह के डिफेक्ट नेम ले लिए, और डिफेक्ट क्वांटिटी 35, 25, 20। अब इस पे पैरेटो चार्ट आपने आरएम में पढ़ा होगा, पैरेटो चार्ट। तो पैरेटो चार्ट हम बना सकते हैं मिनी टैब का यूज करके, बहुत आसानी से बन जाता है। ये स्टैटिस्टिकल मेन्यू है, इस पे आप क्लिक करेंगे और क्वालिटी टूल्स पे क्लिक करेंगे। क्वालिटी टूल्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल के आएगा। यहाँ पे ये देखिए पैरेटो चार्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो स्टैटिस्टिक्स, क्वालिटी टूल्स पे पैरेटो चार्ट। जब आप इस पैरेटो चार्ट पे क्लिक करेंगे ये अगला स्टेप है। अगले स्टेप का विंडो है इस स्लाइड में, पैरेटो चार्ट। ये इस तरह का विंडो खुल के आएगा। यहाँ पे हमारे कॉलम्स, ये वेरिएबल्स हो गए, डिफेक्ट नेम, डिफेक्ट क्वांटिटी। C1 कॉलम में डिफेक्ट नेम है और C2 कॉलम में डिफेक्ट क्वांटिटी है। ये अपने आप ले लिया हमारे डेटा को। यहाँ पे है डिफेक्ट्स और एट्रीब्यूट डेटा इन। तो डिफेक्ट नेम कॉलम पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ अपने आप लिख के आ जाएगा डिफेक्ट नेम। फ्रीक्वेंसीज इन, डिफेक्ट क्वांटिटी पे क्लिक कर देंगे, ये डिफेक्ट क्वांटिटी ले लेगा। अब यहाँ कंबाइन रिमेनिंग डिफेक्ट्स 95 रहने देंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ये देखिए, ये इस तरह से पैरेटो चार्ट बन के आ जाएगा।
एक काम और हम लोग छोटा सा करके देखते हैं इसी पैरेटो चार्ट पे। पैरेटो चार्ट पे सॉरी मिनी टैब में एक ऑप्शन असिस्टेंट का भी है। ये बहुत ही हेल्पफुल है। अगर हमें नहीं मालूम है या हम कंफ्यूज हैं कि हम किस तरह का ग्राफ हम पे नीचे कंट्रोल चार्ट्स का ऑप्शन है। कंट्रोल चार्ट्स पे क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट स्लाइड दिखाई पड़ रही है। नेक्स्ट स्लाइड। हेलो जी सर। यस सर। ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड में चूज अ कंट्रोल चार्ट। यस सर। यस सर। किस तरह का कंट्रोल चार्ट हमें लेना है, तो यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है डेटा टाइप। डेटा टाइप किस तरह का है हमारा? डेटा टाइप अगर कंटिन्यूअस है तो हम लोग इधर बढ़ेंगे आगे। अगला है ऑप्शन डेटा कलेक्टेड इन सब ग्रुप्स। पहले डेटा टाइप अगर कंटिन्यूअस है तो नेक्स्ट स्टेप है डेटा कलेक्टेड इन सब ग्रुप्स का। अगर ये नो है तो IMR चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं, और अगर ये यस है इसका आंसर नेक्स्ट स्लाइड आएगी IMR चार्ट की, जिसमें डिफेक्ट क्वांटिटी पूछ रहा है। तो डेटा कॉलम हम लोग डिफेक्ट क्वांटिटी का ले लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे हमारे सामने अवेलेबल है हाउ विल यू डिटरमिन द डेटा कंट्रोल लिमिट्स एंड सेंटर लाइन। तो ये ले लिया। एस्टिमेट फ्रॉम द डेटा, जो डेटा अवेलेबल है उसी से एस्टिमेट करेंगे। इतना सेलेक्ट करने के बाद ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये IMR चार्ट बन के आ जाएगा। यहाँ पे नीचे क्लिक करेंगे तो और IMR चार्ट का और भी डिटेल्स अवेलेबल है। चार्ट नीचे बन के हमें दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा अनोवा पे भी काम कर सकते हैं। इसी स्टैट्स के मेन्यू में अनोवा है, लेकिन अनोवा पे काम करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बेसिक स्टैटिस्टिक्स का पे काम करना पड़ेगा, जिसके लिए बेसिक स्टैटिस्टिक्स में आएंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे डिस्प्ले डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। यहाँ डिस्प्ले डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे नेक्स्ट स्टेप में ये विंडो खुल के आएगा, जहां पे कि हमारे पास डिफेक्ट क्वांटिटी और डिफेक्ट नेम अवेलेबल है। तो हम यहाँ डिफेक्ट क्वांटिटी ले लेंगे। डिफेक्ट क्वांटिटी लेने के बाद ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स डिफेक्ट क्वांटिटी का हमारे सामने आ गया, जिसमें
Q1, मीडियन, Q3, मैक्सिमम, कर्टोसिस वगैरह बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स के मेथड्स हैं जिनका हम अप्लाई करके अपने डेटा के इन स्टैटिस्टिक्स को इवैल्यूएट कर सकते हैं. Now we will step into the data tool. इस डेटा टूल पे अनस्टैक कॉलम्स पे क्लिक करेंगे. यहाँ पे हमारे पास दो डेटा अवेलेबल है. अब हमें कुछ वी आर यूजिंग सम डिफरेंट डेटा. देयर आर टू कॉलम्स. वन इज pain level, one is for pain level, and second one is drug formulation. पेन लेवल में 4, 4, 3 इस तरह की न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं और ड्रग फॉर्मुलेशन वाले कॉलम में A, B, C, D इस तरह के ग्रेडिंग में ड्रग्स फॉर्मुलेशन का डेटा अवेलेबल है. अब अनोवा कैलकुलेट करने के लिए अनस्टैक कॉलम्स पे जाएंगे. अनस्टैक कॉलम्स के बाद अनस्टैक कॉलम पे जब क्लिक करेंगे तो ये विंडो खुल के आएगा. यहाँ पे हमारा दोनों कॉलम शो कर रहा है, पेन लेवल, ड्रग फॉर्मुलेशन. नाउ सी दिस स्लाइड. अनस्टैक द डेटा इन पेन लेवल पे क्लिक करेंगे तो पेन लेवल आ जाएगा. यूजिंग सब्सक्रिप्शन इन ड्रग फॉर्मुलेशन पे क्लिक करेंगे तो ड्रग फॉर्मुलेशन आ जाएगा. और यहाँ लास्ट में क्लिक करेंगे आफ्टर लास्ट कॉलम इन यूज. ये जो दो कॉलम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, इसके बाद ये हम जो कैलकुलेशन करने जा रहे हैं अनोवा का, वो उसका रिजल्ट इन दोनों कॉलम्स के बाद में शो करेगा. कैसे, ये नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रहा हूं. ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड में ओके पे क्लिक करने के बाद पेन लेवल ए, पेन लेवल बी, पेन लेवल सी, ये 3 रिजल्ट आ गया. देन कम्स अनोवा. स्टैटिस्टिक्स पे आ जाएंगे. अनोवा पे क्लिक करेंगे. अनोवा में भी कई एक ऑप्शन है. वन वे अनोवा होता है, टू वे अनोवा होता है. वन वे अनोवा पे क्लिक कर दिए. नाउ वी आर वर्किंग ऑन वन वे अनोवा. यहाँ पे व्हेन वी विल क्लिक वन वे अनोवा, दिस विंडो विल अपीयर. यहाँ पे we will select response data are in one column for all factor levels. और फैक्टर हमारा क्या है, ड्रग फॉर्मुलेशन फैक्टर है. इतना डेटा लेने के बाद नेक्स्ट ओके पे, जैसे ही वहां ओके पे क्लिक करेंगे तो ये वन वे अनोवा का रिजल्ट हमारे सामने, कैलकुलेशन स्टैटिस्टिक्स इज इन फ्रंट ऑफ अस. पेन लेवल, वन वे अनोवा, पेन लेवल वर्सेस ड्रग फॉर्मुलेशन मेथड. नल हाइपोथेसिस का रिजल्ट शो कर रहा है. ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, सिग्निफिकेंस लेवल इज देयर. फैक्टर इंफॉर्मेशन विथ लेवल वैल्यूज. So this is the introduction of Minitab software. सर अभी और कितने क्लासेस हैं? बस ये लास्ट क्लास है. थैंक यू.
Thank you so much, Thank sir. you so much, sir.